Hello everyone and students of class 9 and first year स्पेशली बिकॉज आज का जो ये लेक्चर है ये पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर है उस पे हम लोग दो क्वेश्चन है हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का बेसिस है और दिस टू पर्टिकुलर क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ कोचअप the chapter force and laws of motion of class 9 and the question is state Newton's second law of motion. It's a very popular question both for class 9 as well as higher secondary first year. State Newton's second law of motion and prove that Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. तो ये proof करना है. दूसरा question है how Newton's first law gives the qualitative definition of force. So this question is very important both for higher secondary first year and class 9 as I mentioned, and class 9 के लिए it is applicable to the state boards as well as the CBSE boards also. So with this we begin. But before we go into the discussion, let's just summarize what does the three laws of motion given by Newton is, what does the the laws of motion actually provides us. And before with that we just we are just having a look at the definition of force. But we know that we have discussed we have completed our discussion on this particular chapter. क्लासरूम पे भी ये करा लिया गया है और ऑनलाइन पे भी जितना पॉसिबल हो चुका है ये करा लिया गया है. तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं. So force and laws of motion is the chapter. So what is force basically? An external agent which changes or tends to change the state of a body from rest or that of uniform motion is called force. तो force वो external agent है जो किसी बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है फ्रॉम रेस्ट और दैट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए बॉडी. स्टेट किसी भी स्टेट तुम पकड़ सकते हो, लाइक मे बी यू कैन कंसिडर इट मे चेंज द साइज एंड ऑल दिस. सो विल गो इनटू दैट लेटर ऑन, और we have already will consider that, we have discussed that definitely. But the state that we are talking about is if a body is at rest, then a force can bring some motion in it. If a body is moving with uniform motion, either it can accelerate and gain more speed, or it can undergo retardation and comes to rest. So external agent, that particular external agent is known as force. So the SI unit of force is Newton. It is a vector quantity. And here one mistake, not mistake, लेकिन ये जानबूझ के दिया गया है so that we are able to explain it properly. The SI unit of force is Newton. So a small लग रहा होगा कि नहीं सर यहाँ पे तो कोई मिस्टेक है नहीं, बट लुक एट दैट वर्ड न्यूटन. ओके, सिंस it is a SI unit and it is named after a scientist, so what should be done? ये जो न्यूटन का n है, it should be in small letter. Okay, the name of the scientist Sir Isaac Newton should be in capital, but when we are 5 न्यूटन फोर्स से 10 न्यूटन फोर्स, अगर हम लोग कैपिटल n से डिनोट करते हैं तो ठीक है. 5 न्यूटन फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं 5 कैपिटल n फोर्स. बट अगर हम लोग वर्ड में लिखते हैं देन व्हाट डू वी नीड टू डू? न्यूटन जो NEUWTON है उसमें हम लोग जो पहला जो कैपिटल n है उसको हम लोग कैपिटल नहीं लिखेंगे, we will write it as small letter. So the SI unit of force is Newton. It is a vector quantity. Okay. Newton's laws of motion. Newton has given 3 laws to describe the motion of bodies. These laws are known as Newton's laws of motion. Newton's first law of motion. Newton's first law of motion describes the condition of a body in a state of rest or that of uniform motion in a straight line. ठीक है. Newton's first law of motion gives the qualitative definition of force. तो ये किस तरह का क्वालिटी के बारे में बोला गया है, किस तरह के बारे में नहीं बोला गया है, इसको हम लोग आगे जानेंगे. तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? A body at rest will remain at rest and a body in uniform motion will continue a state of uniform motion in a straight line unless it is compelled by a net external force to change its state of rest or that of uniform motion. So this is what the first law is telling. Okay, we have already discussed that. We have already seen कि application of first law हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या नहीं लिख सकते हैं. We have already discussed that in our classes. So
Considering the time limit, we are moving in with the question. So what does Newton's second law of motion tells? Newton's second law of motion gives us a relationship between force and momentum of a body. Okay, so the law goes like that: the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied and takes place in the direction of the force. So these are the laws that have been given. Now coming to the question, show that Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. तो ये मुझे दिखाना है. तो पहला जो लॉ है न्यूटन का, it gives the qualitative definition of force. How? Okay, how? The question is how. So if we discuss the Newton's first law of motion, what does it tell? It tells us, like, a body will be at rest, or a body will be either in a state of uniform motion. तो उसी पे रहना चाहेगा, ठीक है, बट अनलेस यू प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल, ठीक है, which will compel it to change its state of rest or that of uniform motion. So the question is, show that Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. ये हम लोग को दिखाना है. तो from Newton's second law of motion we know the rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and takes place in the direction of it. ठीक है, तो उसका Newton's second law of motion gives us the quantitative definition of force because we are able to find, like, force in terms of a particular quantity. हम लोग को force का एक value मिल रहा है, F equal to m into a, mass into acceleration. We are getting a particular value of the force. So that is why Newton's second law of motion, like, it gives us the quantitative definition of force. फर्स्ट लॉ हम लोग को क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, क्योंकि वो हम लोग को नेचर ऑफ द फोर्स के बारे में बताता है और कंडीशन भी देता है कि अगर, लाइक, if the force is net external, it should be definitely unbalanced. If the force is net external, then that particular force is able to change the state of a body from rest or that of uniform motion. Now if the force is zero, okay, ये zero है, that is no force is acting on the body, तब हम लोग क्या लिख सकते हैं इक्वेशन पे? F equal to ma है, so F की जगह पे हम लोग जीरो बिठाएंगे. Now m into a equal to zero. Why a equal to zero? Because mass can never be zero. Mass of an object can never be zero. Okay, so acceleration is zero. हम लोगों ने कंडीशन क्या पकड़ा है? इफ फोर्स इज जीरो, कि मान लो उस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा हो, तो उस केस में उस बॉडी का कंडीशन क्या होगा? तो नीचे देखते हैं. सिंस द एक्सेलरेशन इज जीरो, दिस मींस दैट when no force acts on the body, जब उस पर्टिकुलर बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होगा, then the body will be either at rest or in uniform motion, because we know that if a body is moving with a uniform motion, its acceleration is zero. ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है. इफ a body is moving with uniform velocity, that means एक्सेलरेशन का डेफिनेशन ही है कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. अगर वेलोसिटी ही चेंज नहीं हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, मतलब इट इज मूविंग आइदर विथ यूनिफॉर्म मोशन और इट इज एट रेस्ट. सो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट, दिस इज नथिंग बट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, एंड व्हाट डज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स? A body at rest will remain at rest, and a body in uniform motion will continue its state of uniform motion unless and until it is compelled by a net external force. ये है उस फोर्स का क्वालिटी. It is a net external force to change the state of rest or in uniform motion. तो इसको फिर से समराइज करते हैं. अगर फोर्स जीरो है मतलब उस बॉडी पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस एक्सेलरेशन जीरो होता है. और एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब क्या है? दैट आइदर द बॉडी इज मूविंग with uniform motion or the body is at rest. Now if some, like, material force is acting, that means if the force is not zero, okay, then in that case, like, the body will be compelled to change its position or its state of rest or that of uniform motion. So this particular statement, we can say that Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. ये भी बता सकते हैं कि Newton's first law of motion is contained in Newton's second law of motion भी बोल सकते हैं. ठीक है, क्योंकि F equal to ma है. Now F equal to ma again, we are writing it here. F zero होता है, that means m into a is zero. m cannot be zero, that means अगर दो, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है तो तुम किसी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हो और तुम्हारा आंसर जीरो आता है, दैट मीन्स किसी एक क्वांटिटी, कोई एक क्वांटिटी जीरो होगा. अब मास तो जीरो कभी भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है. अगर एक्सेलरेशन जीरो है मतलब दैट पर्टिकुलर बॉडी इज
either at rest or it is in uniform motion. And your A statement, this is nothing but the statement of Newton's first law of motion. Hence, we can consider this statement, that we can tell that Newton's first law of motion is a special case of Newton's second law of motion. Thank you. And also for all the particular notes that Coachup provides, you can text or drop a message in the WhatsApp number that is given in the description of the video. Okay, thank you very much.